Hello everyone, welcome back to Swiflearn YouTube Channel. And yeah, Sushma Ma'am, welcome you everyone. How are you all? I hope you all are good. Yes, so today we will continue the session which we start in the last class. So special type of quadrilateral, and it's a second session of that. So today we will continue that one. But first, I'll introduce for our new viewers what is Swiflearn. So Swiflearn is India's most sincere learning destination for class 1 to 10. Here all the classes are 100% live and interactive. Each student gets personal attention of their teacher because in our batch we have maximum 6 students, minimum 1. Our academic mentor team works on student progress. They are also tracking whether student working their homework or not, and they are in regular touch with parents. We are covering your syllabus as per your preference. It may be ICSE, your CBSE or your state board, and also handle custom requests. Means if you require some extra classes for the revision, for the doubt clarified, we will provide everything. And you know, if the child enrolled with us, they get additional benefits. So as your school conducting PTM, we are also conducting PTM, and during the PTM we are providing progress report of the student to the parents. So how many practice tests they had attempted, how many homeworks they done, their attendance, their scope of improvement, everything in a detailed progress report. And we are providing you unlimited practice test. तो जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप कितने भी प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं. And the best thing is, if you enroll with us with a one subject, then also you can attempt another subject practice test. And every Sunday we are conducting SATs, Swiflearn Academics Test. It's a live and 1 hour test, and if you are on leaderboard, you will get scholarship from our side. And you know, after completion of every chapter, we provides you objective homework as well as subjective. So पता है आपको subjective homework school exams में आता है. So here your well trained teachers helps you to in this how you will get in each step some marks. So देर किस बात की, जल्दी से एक trial class book कीजिए, and that is free of cost, and you can share your experience with me here in comment box. So for our new viewers, those who just now joined us, so please subscribe our channel, and if you don't want to miss any update, press the bell icon, and if you like this video, press the like button, comment and share. So let's start the new session, special types of quadrilateral, part 2nd. So as you know, in the first one we had learned about the trapezium, parallelogram, its property. But today what we are going to learn? Today we are going to learn some special type of quadrilateral which falls under parallelogram. So as you can see, rectangle, kite, rhombus, square, its property, some proofs, and we're going to relate the property, how they are relatable to each other. Okay, so first let's recall what we had learned in the first session. So trapezoid, a trapezoid is also called it as trapezium. It's a flat closed shape having 4 straight sides. It's having 4 sides, then only it's called it as quadrilateral. अगर उसमें 3 sides होंगे, it's called it as triangle. Okay, so the property is having one pair of parallel side and the another non-parallel. But आपको पता है non-parallel sides we'll call it as legs. But ये हमेशा ही non-parallel नहीं होती, ये कभी कभी parallel भी होते हैं. And जब ये parallel होते हैं तो ये figure बन जाती है कुछ और. Means क्या बन सकती है? It can be a parallelogram. Exactly. So if parallelogram follows all the properties of trapezium, so we can say that parallelogram is a trapezium. But can we say that trapezium is a parallelogram? Let's see. So what are the properties of parallelogram? A parallelogram is a quadrilateral with opposite sides parallel. Okay, sides parallel as well as equal. And the next thing is opposite angles also equal. Measure of angle C and measure of angle B, measure of angle A and measure of angle D. And you know the diagonals are bisecting each other. Bisecting. So these property not follows under trapezium. So parallelogram have some superior property as compared to the this trapezoid. Okay, so this one it's called it O, and now we can say that OA equals to OD and OC equals to OP. Yes, so parallelogram can be called it as trapezium, but trapezium cannot be called it as parallelogram. Chaliye, so let's learn about some more shapes. As you can see here, triangle, rectangle, and the another one is somewhat look like
cube, but if you open this one, so each face represents the square. Let's learn about this. So first shape is rectangle. You know, rectangle is also called it as parallelogram, but it's a special type of parallelogram. You know why? So in parallelogram, opposite angles are equal, but in rectangle, all the angles are equal length. So rectangle is a parallelogram with equal angles. Now, as you can see that x degree, but do you know what is the measurement of x? Okay, I'll show you. So x we want to find, and you know the sum of the quadrilateral is, some angles of sum of quadrilateral is 360 degree. Okay, so x plus x equals to 360. So 4x, so x value is 90 degree. So we can say that each angle of rectangle is a right angle. 90 degree है भाई, right angle हो गया. Okay, but it follows some property, all the properties of parallelogram. But rectangle के पास भी अपनी कुछ properties है. एक तो हो गया कि उसके पूरे एंगल्स का मेजर क्या होगा, सेम है. अपोजिट एंगल्स तो है ही सेम, बट सभी एंगल का मेजरमेंट भी क्या है, सेम है, 90 डिग्री. बट यू नो वन मोर प्रॉपर्टी that distinguish in between parallelogram and rectangles. So rectangles diagonals of equal length. Parallelogram के diagonal bisect करते हैं, rectangle के भी bisect करते हैं, but diagonals of rectangle are in equal length. So D1 equals to D2. Let's understand this one by a question. Okay, so let's continue. So here we have a problem on rectangle. Rent is a rectangle, so RENT. Okay, its diagonal meet at O. Find x. We have to find the value of x if OR equals to 2x plus 4 and OT equals to 3x plus 1. Now see, OR 2x plus 4 and OT equals to 3x plus 1. Okay, fine. Now you know OT equals to OE. है भाई, OT equals to OE, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं. सिमिलरली OR equals to ON. yes, but do you know रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी क्या थी, TE is equals to TNRN. ये वाला लेंथ डायगनल की ये लेंथ, अगर वो डायगनल की लेंथ इक्वल है मीन्स उसका हाफ भी क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है. सो वी कैन से दैट दिस OR equals to OT. बिल्कुल है. Just equate the values here, 2x plus 4 and 3x plus 1. So x take to the other side and the numbers to the another. So 3x minus 2x and 4 minus 1. So 3x minus 2x is x, 4 minus 1 is 3. So x value is 3. See, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, आप इस प्रॉपर्टी को आपने फॉलो किया and then you get the value of x. So I'll show you the solution part of, so OT is half of diagonal TE, similarly OR is half of diagonal RN. Okay, जैसे half equal हो जाएंगे because diagonals equal थे, and if you equate so you'll get x value is equals to 3. Easy. So now let's prove about diagonals of rectangle. So in a rectangle ABC, diagonal bisect each other. क्या हम prove कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. So as you can see that highlighting of two that triangles, angle AOD, triangle AOD and triangle BOC, or you can say COB. So how we can say that? By the congruency. Exactly. So let's take two triangle AOD and BOC, and here AD equals to CB or BC. Yes, because rectangle है भाई, opposite sides क्या है, equal है. Or you can say that by the parallelogram also opposite sides क्या है, same है, equal है. Now angle AOD, this angle and this angle. So ये आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, vertically opposite angle. Okay, VOA. And the next thing is, अभी हमने पढ़ा था कि डायगनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो ये तो बाइसेक्ट करते हैं, बट ये एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं. सपोज इफ इट्स 90 डिग्री देन इट बिकम 45, इट बिकम 45. ओके, तो ये एंगल को भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. सो सिमिलरली एंगल OAD इक्वल्स टू OAC OCB, दैट्स 45 डिग्री बिकॉज डायगनल बाइसेक्ट द एंगल एज वेल. सो बाय जस्ट हमने थ्री कंडीशन हमने सेटिस्फाई की, और उसके बाद हमने बता दिया कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. सो नाउ वी कैन से दैट OA इक्वल्स टू OC, OD इक्वल्स टू OB.
by CPCT. Yes, by CPCT we can conclude that one. So now let's come to the next figure, that is rhombus. But do you know where we are using this rhombus? And this rhombus is quite similar to your kite. Yes, हमने देखा होगा गुजरात साइड में एंड मोस्ट ऑफ द एरिया ये जो हम काइट करते हैं, पतंग जिसे हम बोलते हैं. यस, सो उत्तरायण के टाइम यूज़ करते हैं, प्ले करते हैं इसके साथ में. बट you know that's not actual shape of the kite. Kite shape is different. We are using rhombus as kite. But what is the relation between kite and rhombus? I'll tell you. So here you can see two figures. This figure is for kite and this one rhombus. It's look like similar, but they are not totally same. They are similar, but they are not same. Okay, they are not identical, because kite having two adjacent sides equal, but rhombus having all the sides equal. जैसे आपको पता है ना स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ऐसे rhombus में भी सारी साइड इक्वल होती है. फिर हम काइट को rhombus बोल सकते हैं या rhombus को काइट बोल सकते हैं. चलिए देखते हैं. So now we obtain rhombus as a special case of kite which is not a parallelogram. Who is not parallelogram? Kite is not a parallelogram. क्यों नहीं है भाई? Because पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं. बट क्या काइट में अपोजिट साइड्स पैरेलल है? पैरेलल नहीं है. यस, एंड इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. बट rhombus is a kite. Let's see this one. Or kite is a rhombus. So always remember that the side of rhombus are of same length. Okay, this is not the case with kite, but kite के साथ ये वाला केस नहीं होता है, kite के साथ different केस होता है. So we'll see that relation between quadrilateral, square, parallelogram, all things in a table. I'll show you. Okay, so since opposite sides of rhombus have same length, बिल्कुल सेम लेंथ है, सो सेम लेंथ है अपोजिट साइड. बट यहाँ तो बोला है कि rhombus की सभी साइड्स इक्वल है. सो अपोजिट साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगी. यस, अपोजिट साइड क्या होने वाली? इक्वल ही होने वाली है. सो ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी उसने फॉलो कर ली. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है. अगर rhombus ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है मतलब फिर भी वो पैरेललोग्राम है. एंड डायगनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वन अनदर. ये वाली प्रॉपर्टी डायगनल ने थोड़ी सी काइट से ले ली. ओके, सो बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहा है. सेम केस हैपन विद द काइट का. और इसीलिए हमने बोला कि काइट इज अ स्पेशल केस इन अ rhombus. ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी rhombus ने किससे ली? काइट से ले ली. So now let's prove this one, how the diagonals of rhombus perpendicular bisector, not only bisector, perpendicular bisector. Okay, so here we are going to take two triangles, triangle AOD and COD. Okay, so again congruency. So OA equals to OC. अब आप बोलोगे मैम OA equals to OC, why? Because diagonal bisecting भैया. OA equals to OC पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. ओके, एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये तो rhombus की प्रॉपर्टी है ना. OD is equals to OD. This OA and then OD equals to OD. This is a common side. And you know AD equals to CD. So similarly हमने इसको बता दिया कि ये ट्राइंगल की 3 हो गई है प्रॉपर्टी बाय SSS, साइड साइड साइड. कोई एंगल नहीं था, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने क्या किया? इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया. सो नाउ अगर आप देखते हो कि ट्राइंगल नाउ एंगल AOD एंड COD अब क्या हो गए? इक्वल हो गए बाय CPCT. सो इफ वी सी दिस, सो इट्स अ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म 180 डिग्री. So now angle AOD plus COD equals to 180, and we know AOD equals to COD. So in a place of COD you can write AOD, or in a place of AOD you can write COD. So 2 times of angle AOD equals to 180. Now angle this AOD is 90 degree. So it's here form 90. Similarly here form 90. Similarly here form 90, and here form 90 degree. Done. Perpendicular bisector. So diagonals are perpendicular bisect. Okay, at right angle. So ये क्या हो गया कि हमारा done.
Now I'll show you what are the properties rhombus has and how we can relate it to the parallelogram. तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज. As you can see here. तो चलिए एक rhombus ड्रॉ करते हैं. Yes, so as you can see that four-sided figure. And now the next case, angles, opposite angles are equal. Similarly we have in the parallelogram. So same we have in the rhombus. Now the next thing is diagonals are bisecting. Yes, bisecting. But here not only bisecting, diagonals are perpendicular bisect. Perpendicular bisect, and angles are also bisecting due to this diagonals. So now all the properties, it follows the perpendicular, this parallelograms, and two more extra property, all the sides of equal length and the diagonals are bisecting at 90 degree. Is it clear what are the properties we have in the rhombus? Yes. So ऐसे आप फिगर से बिल्कुल आप इसको क्लियर कर सकते हैं. Now come to the next figure, that is square. So now what is the difference between rhombus and square? अभी तो आपने बोला कि मैम rhombus की सारी साइड इक्वल होती है. Exactly. तो स्क्वायर की भी तो सभी साइड इक्वल होती है. हाँ बिल्कुल होती है स्क्वायर की. But what is the difference between square and rhombus? Square also having all the sides equal. Yes. Here this square having some of the properties of rectangle. What's that? Rectangle having that angles of equal length, square also having angle of equal length and 90 degree. चलिए तो ये properties ने कहाँ से ली? rectangle से. And diagonals are of equal length. Okay. And here what is the more thing? One more property from rhombus, diagonal bisecting, perpendicular bisect. तो अब इसने सबकी प्रॉपर्टी ले ली. इसने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ले ली, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ले ली, इसने रोम्बस की भी प्रॉपर्टी ले ली. सो विच वन इज द सुपीरियर? स्क्वायर इज सुपीरियर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्क्वायर इन वेरी डिटेल. यस, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स. Square has all the properties of rectangle. Additional, all the sides have equal length. Exactly. And one more thing. Square diagonals of equal length. ये तो हमारे पास rectangle में भी था. So now they are bisecting one another. Are of equal length. ये किसके बारे में बता रहे हैं हम? Diagonal. So square के diagonals जो होते हैं वो bisect करते हैं. Equal length के होते हैं. और one more thing is perpendicular to each other. जैसे कि हमने rhombus में देखा था. Okay, so diagonal of squares are perpendicular bisector of each other. Yes. So now let's prove this one and then we will see what are the relation and किस type के questions आपके exam में पूछे जाते हैं. So the diagonals of square are perpendicular bisector of each other. So इसका कुछ ना कुछ part जैसे हमने rhombus में देखा था कुछ वैसे ही रहने वाला. So here we are going to take, जैसे कि आपको highlight दिख रहा है, एक triangle BAD and triangle ABC. Okay, and again कि हमें जब equal बताना है, again we are going to use this congruency. So in triangle ACB and triangle BAD, so AB is common base, same side. Okay, and then you know it's that angles are 90 degree ABC and BAD. One more thing, AD equals to BC. Reason? बिकॉज ये स्क्वायर है और ये पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. सो वन एंगल टू साइड्स. सो SAS क्राइटेरिया से हमने इसको क्या कर दिया? सेम कर दिया, कॉन्ग्रुएंस कर दिया. सो AC इक्वल्स टू BD बाई CPCT. नाउ वी गॉट that angle AOB equals to angle COB. अब AOB और COB की बात हो रही है. Okay. Now if you know AOB and COB, so it's form a linear pair. Linear pair मतलब दोनों का सम कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है. अब 180 डिग्री ये पहले ही इक्वल है जैसे रोम्बस में किया था, या तो उसकी प्लेस पे उसको रख दो या उसकी प्लेस पे उसको रख दो. तो एंगल AOB प्लस AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2 times of AOB is 180 and A angle AOB is 90 degree. Okay, so AC and BD bisect at right angle.
Clear? So now similarly let's see some properties of this square. Okay, let's see some properties of this square here, कि कैसे स्क्वायर सबकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को, एज वेल एज रोम्बस. सो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं एक स्क्वायर, एंड जैसे आपको पता है स्क्वायर हैविंग ऑल द साइड लेंथ इज इक्वल. ओके, एंड सभी एंगल्स की लेंथ कितनी होने वाली है? 90 डिग्री होने वाली है. So all the angles length measure is 90 degree. Yes, now the diagonals are bisecting each other. They are equal in length. As you can see here, and not only bisecting, perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ काइट. सो वो काइट से प्रॉपर्टी रोम्बस ने ली और रोम्बस से स्क्वायर में भी आ गई. इज इट क्लियर? ग्रेट. सो आप एंगल्स देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स की वजह से ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे, और इसी वजह से हमारा स्क्वायर क्या बन गया? सुपीरियर बन गया एज कंपेयर टू अदर फिगर्स. ओके, लेट्स move to the next slide. So here we have some question. अब आपको पता है ये questions आपके एग्जाम में कैसे आते हैं. ये question आपके आते हैं एग्जाम्स में, fill in the blanks, true, false, prove that. So if you get the prove that, so you have to show the properties and then you can prove whether it's called it as or not. Okay, so the first question, all rectangles are square. All rectangles are square. Is it possible? अब ये rectangle है भाई, ये स्क्वायर है. स्क्वायर ने तो सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की ले ली थी. क्या रेक्टेंगल ने भी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की ले ली थी? ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट कैन वी से दैट रेक्टेंगल आल्सो हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल? नो. सो क्या हो गया? केस फॉल्स. ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. ये हमारा रोम्बस है. रोम्बस हैविंग ऑल द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम हैव अपोजिट साइड्स पैरेलल equal. Okay, opposite angles are equal, diagonal bisecting, but this rhombus having one more extra property. So which one having extra ना, that becomes superior, और वो नीचे वाले को क्या कर लेगा? कवर. So इस केस में ये क्या हो जाएगा? ट्रू. yes, all rhombus are parallelogram. all rhombus are parallelogram. Now come to the next one, all squares are rhombus and also रेक्टेंगल. सो मैंने अभी बताया, जो सुपीरियर बन गया उसने सबको नीचे वाले को क्या कर लिया? कवर कर लिया. एग्जैक्टली. सो दिस वन इज ट्रू. ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. ये क्या कह रहे हो भाई? जब वो रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम तो हो ही जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. तो यहाँ नॉट पे थोड़ा ध्यान देना, दैट बिकम योर फॉल्स. इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस. ऑल काइट्स आर रोम्बस. Kite is inferior as compared to rhombus. Why? Because rhombus की सारी sides equal होती हैं. Kite की property rhombus के पास है, but rhombus kite के पास rhombus की property नहीं है, इसीलिए केस क्या हो गया? false. अब इसी का just opposite दे दिया, all rhombus are kite. Exactly true, because rhombus के पास kite की property है, but kite के पास rhombus की property नहीं है. Okay, so first false, second one is true. Now come to the next question, all parallelograms are trapezium. Exactly, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. जब स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, तो स्क्वायर ट्रेपेजियम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. तो स्क्वायर इज ट्रेपेजियम, बिल्कुल ट्रू. नाउ वी हैव द टेबल. इस टेबल से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा और ये आपको बहुत ईजीली हेल्पफुल रहेगा इन प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए. सो पैरेललोग्राम अभी तक हमने, अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कुछ हद तक सेट हो चुका होगा कि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट. नाउ कम टू द रोम्बस. ऑल द प्रॉपर्टीज and now not opposite angles equal. Here all the sides are equal. Okay, all the sides are equal. Now all the properties of parallelogram and
another property, diagonals are equal and each of the angle is a right angle. Similarly, when we move to the next, square, so square having property of parallelogram, rhombus, rectangle and kite. अब kite में देखिए क्या होता है. So kite में क्या होता है कि ये जो adjacent side होती हैं ये equal होती हैं and this also equal. But ये जो diagonal होता है इनका, ये perpendicular यहाँ बना रहा होता है. And you know this angle, measure of angle D equals to B. But angle, measure of angle A is not equal to measure of angle C. And these are the properties of kite. So this is the end of the session, but we have some facts. तो आपको पता है कि quadrilateral कहाँ से आए थे? इनको इन्वेंट किया था एंशियंट ग्रीक्स ने. इनको सबसे पहले क्या कहा गया था? पाइथागोरस. और आपको बता दें कि quadrilateral की स्टार्टिंग में साइड्स कितनी थी? 3. और इसको अंडरस्टूड करना बहुत ही डिफिकल्ट था. उसके बाद इस पर वर्क ऑन हुआ और फिर इसको हमने बताया कि ये 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल में. ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रोम्बस? तो मैंने आपको बताया काइट, पतंग. एंड अगर आप लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको पता है कि हम इयररिंग्स डालते हैं. यस, इयररिंग्स ऑल्सो हैविंग शेप ऑफ रोम्बस. समवन वियरिंग रिंग्स, दैट ऑल्सो. सो रोम्बस पता है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है जो स्पिन कर पाए. और ये ग्रीक वर्ड से आया था रोम्बोस. सो इसके बारे में आप कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं. इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आप मुझे बताइएगा. ओके, सो व्हाट वी हैड लर्न, द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, सम प्रूफ, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द प्रॉपर्टीज. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. थैंक यू. सो दोज हु आर न्यू व्यूवर्स, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है अगर आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पे रहना है. एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट, प्रेस द बेल आइकन. एंड इफ यू लाइक दिस, प्रेस द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. तो मिलते हैं सुषमा मैम के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड बाय.